till now is that we are talking about a truly beautiful mind. And who is the beautiful mind here? The beautiful mind is Albert Einstein. Okay. So Albert Einstein is the beautiful mind here, and he is a true genius, which we are talking about. And here in this chapter, we are not talking about Albert Einstein just as a scientist, which he is known of, but we are talking about him as a person. So when he was a kid, his mother thought he was a freak as he could not talk properly. His playmates or the friends which used to play with him, they called him brother boring because he was not able to play with his children. In fact, his principal or the headmaster, he commented on him that he will never be successful in any of the fields. And he was very much, he did not like the schools at Munich. Munich is the city where he used to study, and he did not like the schools there because of the very strict rules and regulations in the school. So he quits the school in Munich. So in Munich में उसने क्या किया, स्कूल छोड़ दी और उसके बाद में उसने ज्यूरिक एक और सिटी है उसके अंदर ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. Zurich University में क्या हुआ? He met Mileva Maric. Mileva Maric is the girl who used to study in his class, and he fell in love with Mileva Maric. So later on, when after leaving this university, he published the very, very important papers. He made the very, very great discoveries for which he is known. The theory of relativity and the energy mass relationship. So he has given such important theories to the world. He has made such important discoveries to the world that he is known for this genius. So in all, we are learning about Albert Einstein ने क्या क्या काम किया है वो तो हम देख ही रहे हैं. But इन सब तक वो कैसे पहुंचे? How he climbed that ladder? How he became the true genius which we are talking about? That we are going to learn. Okay. So up till now, what has happened? Albert Einstein has published papers on theory of relativity and energy mass relationship. So let's move towards the chapter. The screen, if the chapter is not visible to you on the screen, you can take out your books and you can see the chapter in that. So let's start. While Einstein was solving, wait, children, yeah. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. So he was making so many discoveries about relativity, about energy mass relationship, about momentum, about motion of objects. So he was making so many discoveries. So इतने सारे जब वो difficult problems solve कर रहे थे physics की, but his private life, his personal life was unraveling. लेकिन उनकी personal life इतनी अच्छी नहीं चल रही थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. So Albert loved Mileva and he wanted to marry her right after finishing his studies. So studies khatam hote he wanted to marry Mileva. But his mother was against it. But his mother, Albert Einstein's mother, she did not want Albert to marry Mileva. She did not want that he marries her. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. So why was Albert Einstein's mother was against the marriage of Albert and Mileva? Because she thought that Mileva was older than him, 3 years older than Albert, and she was too old for him. That's why she did not want to marry marry Mileva to Albert Einstein. She was also bothered by Mileva's intelligence. And the other problem which she had was Mileva's intelligence. उनको लगता था कि मिलेवा बहुत इंटेलिजेंट है. She is a book like you. वो भी तुम्हारी तरह बहुत किताबी कीड़ा है. तुम भी किताबी कीड़ा हो. So you will not be good together. So that's why Albert Einstein's mother did not want Albert to marry Mileva. Einstein put the wedding off. So Einstein ने wedding जो थी मिलेवा और Albert की वो उसने cancel कर दी. The pair finally married in 1903. So finally, Mileva और Albert ने कब शादी की? 1903 में. And had two sons. And उनके दो बेटे हुए. But a few years later, the marriage faltered. But after a few years, what happened to the marriage? The marriage faltered. Faltered means
their marriage became weak. Their marriage began to rumble down. उनकी marriage टूटने लगी. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. So earlier, why was Albert attracted towards Mileva? Because he thought that she was because Albert thought that she is yeah, very creative, very intelligent creature, and that's why Albert liked Mileva. And also, he found an ally in her against the people who don't like the creativity part. Okay, so उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलेवा इसलिए पसंद आया because she was very intelligent. But later on, जब उनकी शादी टूटने लगी, she lost her intellectual ambition. So now she was not being intellectual or intelligent anymore, and she was becoming an unhappy housewife. और later on वो बिल्कुल पूरे टाइम उनका झगड़ा होता रहता था अल्बर्ट और मिलेवा का after they got married. So after years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. तो फाइनली इन कपल का तलाक हो गया कब 1919 के अंदर. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर एंड उसके बाद में आइंस्टाइन ने किससे शादी की? एल्सा से. हिज कजिन एल्सा से शादी की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. So अब जब इतनी सारी problems चल रही थी उनकी personal life में, उसके साथ साथ he was rising to world fame. That means what? He was becoming famous in the world. अब ऐसा क्या हुआ जिससे he became famous in the world? Let's see. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में क्या हुआ? उन्होंने अपना theory of relativity का पेपर पब्लिश किया. मतलब theory of relativity डिस्कवर की, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक ग्रेविटी के लिए नई रूल्स मिले. theory of relativity की वजह से ग्रेविटी के लिए नए रूल्स बना पाए वो. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. So अब ग्रेविटी के लिए जो नए रूल्स अल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकाले थे, एक 1919 में क्या हुआ? एक एक्लिप्स आया. एक्लिप्स इज ग्रहण आया. ओके, एक्लिप्स ऑफ द सन, सोलर एक्लिप्स आया, सूर्य ग्रहण हुआ 1919 के अंदर. और इसकी वजह से वो प्रूफ हो पाया कि उन्होंने जो थियरीज दी थी वो सही थी. That the theories given by him, that the discoveries made by him was accurate. It was proved. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. अब आइंस्टाइन ने क्या actually calculate किया था? He calculated correctly in advance the extent to which light from fixed stars would be deflected through sun's gravitational field. कि sun की gravity का स्टार्स की लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उन्होंने करेक्ट कैलकुलेशन उसकी बता दी थी एडवांस में ही. सोलर एक्लिप्स नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन कर दी थी कि सन की ग्रेविटी का स्टार्स की लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये सारा कैलकुलेशन उन्होंने पहले ही कर दिया था. सो द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो उनकी जो कैलकुलेशन है सारी, उनकी कैलकुलेशन ग्रेविटी को लेके, नाउ न्यूज़पेपर जो थे सारे, उन्होंने इस वर्क को क्या कहा? साइंटिफिक रेवोल्यूशन की. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो डिस्कवरीज की हैं, जो कैलकुलेशंस की है, दे आर अ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा साइंस के अंदर चेंज आया है, बहुत बड़ा बेंचमार्क है साइंटिफिक डिस्कवरीज के अंदर. Einstein received his Nobel Prize for Physics in 1921. So इसके बाद इनकी सारी डिस्कवरीज के लिए Albert Einstein received his Nobel Prize. So getting a Nobel Prize is a big thing, right? Getting a Nobel Prize is not anyone's cup of tea. किसी को भी Nobel Prize नहीं मिल जाता है. जब आपने बहुत ज्यादा कुछ डिस्कवरी की होती है आपके फील्ड के अंदर, जब आपने कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरी की होती है आपके फील्ड के अंदर, then only you get this very famous prize. Then only you get this very famous prize in the world, which is Nobel Prize. So Einstein received his Nobel Prize for physics. उन्होंने physics के अंदर discoveries की थी, so that's why he got Nobel Prize in physics. In 1921, he was showered with honors and invitations from all over the world.
and lauded by the press. So अब किसी को नोबेल प्राइज मिला है तो he was receiving showers of honors. सब जगह से उन्हें बहुत ज्यादा praise मिली, तारीफ मिली, बहुत सम्मान मिला, and invitations from all over the world. And people from all over the world were inviting him to come to their place कि आप हमारे यहाँ पे आके स्पीच दो, आप हमारे यहाँ पे आके लोगों को बताओ कि कैसे आपने डिस्कवर किया. And he was lauded by the press. और प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस नहीं. दिस प्रेस PRESS मीन्स मीडिया. ओके, तो जो मीडिया था, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, इन सबको हम क्या कहते हैं? मीडिया. सो ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो है प्रेस के अंदर, न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा न्यूज छपने लगी उनकी, बहुत ज्यादा टीवी में आने लगे वो, बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरीज, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. So this is about the Albert Einstein as a scientist, और as a scientist उन्होंने क्या क्या किया और उनको क्या क्या जो उन्होंने डिस्कवरी की उसकी वजह से क्या क्या उनको हासिल हुआ, उनको जो सम्मान मिला, नोबेल प्राइज मिला, प्रेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रेज फ्रॉम द मीडिया. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. अब अभी तक एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ पे थे? स्विट्जरलैंड के अंदर थे. स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने पढ़ाई की थी और ये जर्मनी के अंदर थे ओवरऑल. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज इन जर्मनी अप टिल नाउ. बट यहाँ पे 1933 में जर्मनी में क्या हुआ? नाजीज केम टू पावर. सो हु आर नाजीज? नाजीज मतलब अडोल्फ हिटलर का नाम सुना है आपने, राइट? सो अडोल्फ हिटलर केम टू पावर इन 1933. जब हिटलर यहाँ पे पावर में आ गया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया एंड ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स. और वो कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब 5 साल बाद जब अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएस चले गए, उसके बाद क्या हुआ? कौन सी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी. न्यूक्लियर फिजन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस which is used in making atom bomb, which is used in making atomic bomb or nuclear bomb. Okay, so nuclear fission की जो डिस्कवरी थी वो कहाँ हुई? बर्लिन के अंदर. बर्लिन कहाँ? जर्मनी के अंदर. अब हिटलर जैसे इंसान के पास अगर सोचो बॉम्ब आ जाए तो वो क्या करेगा? वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? सो एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ इट. ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द अमेरिकन फिजिसिस्ट जो सारे थे, दे वर अफ्रेड कि वहां पे न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई है, उससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, एटम बॉम्ब बना सकते हैं, एंड दैट विल बी रियली रियली हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड. सो everyone was afraid of it and everyone was worried कि क्या होगा अब. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और उनमें से जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे, उन्हें क्या लगता था कि नाजीज हैं, जो नाजीज मतलब हिटलर की जो कम्युनिटी है, हिटलर की जो पूरी पार्टी है, उसे नाजी कहते हैं. ओके, कि सारे जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्हें क्या लगता था कि हिटलर जो है, नाजीज जो है, वो एटम बम या न्यूक्लियर बम बना देंगे एंड दैट विल बी डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, इतनी पावर है उनके अंदर. सो दे वर अफ्रेड दैट अगर एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया देन दैट विल नॉट बी गुड फॉर द वर्ल्ड. सो नाउ हाउ आइंस्टाइन रिएक्टेड टू दिस? At the urge of a colleague means what? Someone who studies with you, someone who works with you, उसको आप colleague कहते हो. Colleague मतलब आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ पढ़ने वाला, that is called as colleague. For example, you classmates are each other's colleague. Okay, आपके साथ पढ़ने वाले आपके colleague, मेरे साथ पढ़ने वाले जो टीचर्स हैं वो मेरे colleague, मेरे साथ काम करने वाले आपके साथ काम करने वाले. So they are your colleagues and they are my colleagues. कलीग्स मतलब साथ काम करने वाले, साथ पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले, दे आर कलीग्स. सो एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को अर्ज किया. अर्ज मींस टू रिक्वेस्ट. ओके, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया. उनकी रिक्वेस्ट पे एल्बर्ट आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा. कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को. On 2nd August 1939, in which he warned, और उस लेटर के अंदर उन्होंने क्या किया? उस लेटर के अंदर
एक्सक्यूज मी, उस लेटर के अंदर उन्होंने वार्निंग दी किसको, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने वार्निंग दी. Which what was this warning? Listen carefully. Okay, this warning is regarding the atomic bomb, regarding the nuclear bomb. उन्होंने warning दी that a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. इस लेटर जो उन्होंने बड़ा सा लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, इसके अंदर उन्होंने वार्निंग दी कि एक सिंगल बॉम्ब इस टाइप का अगर आप फोड़ दोगे, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब जो है वो बहुत हार्मफुल है, वो बहुत डेंजरस है. इट अगर आप इसको एक पोर्ट पे, पोर्ट मतलब कि किसी बंदरगाह पे, बंदरगाह समझते हैं जैसे कि आइलैंड के ऊपर, आइलैंड के ऊपर अगर आप ऐसे किसी कोई बड़ा सा आइलैंड है, कोई बड़ा सा पोर्ट है, उस पर अगर आप एक सिंगल बॉम्ब, सिंगल एटॉमिक बॉम्ब या सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दोगे, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट. तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि वो पूरा का पूरा पोर्ट एक बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके आसपास का कुछ एरिया है वो भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकता है. ये बॉम्ब इतना डेंजरस है. तो उन्होंने पहले ही अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे इनको वार्निंग दे दी. His words did not fail to have an effect. अब इन्होंने वार्निंग दी थी, इतने बड़े साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है, तो उसका क्या असर हुआ? Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अभी तक हमको क्या न्यूज मिली थी कि जर्मन जो नाजीज जो हैं, एडोल्फ हिटलर है, उन्होंने अपना बॉम्ब बना लिया है, उन्होंने एटम बॉम्ब बना लिया है. तो अब जब अमेरिकन को लेटर मिला, अमेरिकन को जब वार्निंग मिली आइंस्टाइन की तरफ से, तो अमेरिकन ने क्या किया? दे डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. उन्होंने सीक्रेटली अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया. और क्या किया? एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और अमेरिकन ने ये बॉम्ब कहाँ ड्रॉप किया? हिरोशिमा और नागासाकी में. जापान के दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे ये पहला बॉम्ब ड्रॉप किया गया. किसने ड्रॉप किया? अमेरिकन ने ड्रॉप किया. और पूरी की पूरी जो सिटीज हैं, पूरा का पूरा हिरोशिमा, पूरा का पूरा नागासाकी, वो डिस्ट्रॉय हो गए. इनफैक्ट आज तक, सो जो इतना मतलब 1940s की बात है और आज 2020 चल रहा है, आज तक भी इस बॉम्ब का इफेक्ट यहाँ वहां पर है. हिरोशिमा में, नागासाकी में आज तक भी वहां अगर जो बच्चे पैदा होते हैं इन हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, वो कुछ डिफेक्टेड पैदा होते हैं. जो इनफैक्ट जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं आज भी, because of this atom bomb, because of this nuclear bomb. इतने ज्यादा powerful bombs थे ये. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. अब जितना जो destruction हुआ, पूरी की पूरी city तबाह हो गई हिरोशिमा और नागासाकी की, तो Einstein was deeply shaken by it. Einstein को बहुत ज्यादा, he was deeply shaken, उनको बहुत ज्यादा खराब लगा इस चीज का. This time he wrote a public missive to United Nations. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कौन है? जो पूरी सारी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनको गवर्न करते हैं, दे आर यूनाइटेड नेशंस. ओके, सो उन्होंने एक इस बार लेटर लिखा किसको? यूनाइटेड नेशंस को लिखा. और उसके अंदर ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने बोला कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, सिर्फ अपने कंट्री का भला देख रही है, बाकी दुनिया के बारे में कोई नहीं सोच रहा. फॉर एग्जाम्पल्स अमेरिकन थे, इनको न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करना था. सिर्फ इनको, इनकी जापान से कोई दुश्मनी नहीं थी, इनको न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करना था, तो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया. ऐसा अगर दूसरे कंट्रीज भी सोचने लग गए तो क्या होगा? पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई ही सजेस्टेड कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए, मतलब जो कि पूरी वर्ल्ड पे गवर्न करने वाली एक ही यूनिट हो. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. तो एक लेटर जो उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उसको लिखा था, तो उसकी वजह से तो ये इफेक्ट हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फूट गया. लेकिन यहाँ पे जो लेटर लिखा उन्होंने, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने सुना ही नहीं. But over the next decade, Einstein got more and more involved in politics. But उनको था कि
ये बॉम्ब जो है ये किसी के हाथ में नहीं आने चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस बॉम्ब्स हैं। सो ही स्टार्टेड गेटिंग इन पॉलिटिक्स, कि अगर वो पॉलिटिक्स में जा पाए, वो अगर लीडर बन पाए, तो वो ये सब स्टॉप करेंगे। Agitating, Einstein got more and more involved in politics, agitating for an end to arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. और उनका पॉलिटिक्स में जाने के पीछे रीजन क्या था? Because he was so much affected by this nuclear bomb drop on Hiroshima and Nagasaki and the amount of destruction which took place there, that he wanted कि ये सब bombs जो हैं ये सब खत्म हो। He was, और इतने पॉपुलर थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको लगा था कि उनकी बात लोग मानेंगे। So he was asking for world peace, कि दुनिया में शांति चाहिए, ना कि एक दूसरे पे कोई बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, ये नहीं चाहिए, आपस में शांति चाहिए लोगों को। And using his popularity to campaign for peace and democracy. Okay, कि कोई भी कंट्री कितना हथियार बना पाएगा नहीं बना पाएगा, इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी कंट्री का मन हो गया तो उन्होंने बॉम्ब बना लिया, किसी कंट्री का मन हो गया तो उन्होंने बॉम्ब बना लिया। इन सब पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि वर्ल्ड पीस जो है वो मेंटेन रहे, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. So when Albert Einstein died in 1955 में जब उनकी डेथ हुई, जब वो 76 साल के थे तब उनकी डेथ हुई, and he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनको साइंटिफिक जीनियस यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट की तरह तो लोग जाना ही गया बाद में भी, आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो। लेकिन ही वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, ही वॉज ऑल्सो फेमस, ही बिकेम फेमस फॉर एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। अब हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के हम दो फेजेस जानते हैं। वन इज व्हेन ही वाज इन विच ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने साइंस के लिए जितना एक्सट्रीम वो कर सकते थे उतना काम किया, उतनी ऑब्जर्वेशंस, उतनी एक्सपेरिमेंट, उतने डिस्कवरीज किए हैं उन्होंने साइंस के लिए। एंड द अदर हाफ ऑफ हिज लाइफ, जो उनका दूसरा हिस्सा है लाइफ का, वो क्या है? अ ग्रेट वर्ल्ड सिटीजन, ग्रेट विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। विजनरी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, की न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, इनका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा। कोई पर्सन जिसे पता हो कि जिसने डिस्कवर किया होगा उसी को पता होगा कि ये कितने हार्मफुल हैं, कितने डेंजरस हैं। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू टेल कि इन्हें यूज ना करें, ये सिंपल नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं है, ये बहुत डेंजरस बॉम्ब्स हैं, एंड दे कैन बी हार्मफुल फॉर द होल वर्ल्ड, एंड दे कैन बी डेंजरस टू द होल वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई अल्बर्ट आइंस्टाइन इज आल्सो नोन एज, उनको क्या पड़ी थी, मैंने तो डिस्कवर कर दिया, खत्म बात। बट ही जो डिस्कवरीज थी, इनका वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इससे भी आइंस्टाइन को फर्क पड़ता था। एंड दैट्स व्हाई अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन एज अ ग्रेट वर्ल्ड सिटीजन। उनको वर्ल्ड पीस से मतलब था, उनको लोगों के लाइफ से मतलब था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको साइंस से और मेरे फॉर्मूले से और मेरी डिस्कवरी से मतलब था। नो, ही वाज नॉट जस्ट अ सिंपल साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट वर्ल्ड सिटीजन एंड अ विजनरी। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी पार्ट लिया, ताकि लोग, जो कंट्रीज जो अपनी मर्जी से हथियार बना रही हैं, उस पे वो एक एंड you can put an end to that, and also so that the use of nuclear bombs, atomic bombs, can be stopped, and that's why he wanted to end all of this. Okay, so Albert Einstein का ये जो दूसरा side है, visionary और a world citizen का, that is equally important, and that's why he is called as a true genius. So when we talk about the chapter, when we talk about the title of the chapter, A Truly Beautiful Mind. So Albert Einstein का mind तो great था, intelligent तो बहुत थे, but when we say he was a truly beautiful mind, truly beautiful का मतलब कि सिर्फ आपके पास knowledge होना जरूरी नहीं है, उस knowledge को आपने use कैसे किया, उस knowledge का लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उससे भी आपको फर्क पड़ रहा है, then only you are a truly beautiful mind, a great person. Okay, children, so that's all for the chapter. Okay, I want to ask one more thing to you people.
that where is everyone? Children, I'm not able to see you. Please switch on your cameras. Everyone just turn on your cameras. I want to ask you one thing. आपका मोमेंट्स जो बुक है उसके अंदर कितना चैप्टर हुए हैं? मोमेंट्स के अंदर कितने चैप्टर हुए हैं आप लोगों के? एनीवन? प्लीज आंसर मी. मोमेंट्स जो बुक है आपकी सेकंड बुक, दिस इज बी हाइव. ओके, दिस बुक इज बी हाइव. द अदर बुक मोमेंट्स जो है उसके अंदर कितने चैप्टर हुए हैं, कितना नहीं हुए हैं? जस्ट आंसर मी दैट. नोबडी नोस. नोबडी नोस कितने चैप्टर हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं? किसी को पता नहीं है? Nobody knows. The whole class it doesn't know कितने चैप्टर हुए हैं आपके इसमें मोमेंट्स के अंदर. Okay, I'll find it out then. Nobody knows कितने चैप्टर हुए हैं. मोमेंट्स आपकी बुक है, ये आपको पता है? Beehive आपकी बुक है, you know that? You know that you have a book called Beehive. बुक का नाम पता है आपको? Do you know that you have another book called as Moments? So 9th standard की दूसरी बुक है Moments. I don't have it right now. Is it in your syllabus or is it not? आपके syllabus में है moments या नहीं है? Yeah. अयान मालव, do you know आपके syllabus में है moments या नहीं है? इसका कोई चैप्टर पढ़ाया गया है आपको पहले? अयान, I'm unmuting you, अयान. Wait, yeah, अयान, कोई चैप्टर पढ़ा है आपको क्या moments का? कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है? No, ma'am. कोई भी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है? ओके. No, ma'am. ओके देन. ओके, थैंक यू अयान. ठीक है, तो ये चैप्टर्स हम बाद में कंप्लीट करेंगे. एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में ये 4th यूनिट तक आने वाला है हाफ ईयरलीज के लिए, 1st to 4th. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर. हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट. ओके, और आपको इसमें क्या करना है, ये सारी जो हेडिंग्स दे रखी है ये कौन से पैराग्राफ पे सूट होती हैं, यू हैव टू फाइंड दैट आउट. So which paragraph talks about Einstein meets his future wife? So which, find out, just answer me these questions. Which paragraph talks about when Einstein meets his future wife? So which paragraph is it? जब Einstein अपनी future wife से मिलते हैं. Future wife means what? मिलावा से मिलते हैं. It is in the 7th paragraph. Okay. So it is in the 7th paragraph where Einstein meets his future wife. And the making of a violinist, Einstein के violin बजाने वाली बात ये कौन से paragraph के अंदर है? Paragraph number 3 it is. Just find it out. It is in the paragraph number 3. Mileva and Einstein's mother. So what was the thing between Mileva and Einstein's mother? Who will tell me? I want the answer from you people. What is the fight between Mileva and Einstein's mother? Answer me this. आइंस्टाइन की मदर और मिलेवा मैरिक के बीच में क्या फाइट थी? Just raise your hand so that I can unmute you and I can get the answer from you. Anyone? Faster. Anushka, I'm able to see you. Yes, ma'am. Yeah, Anushka, I've unmuted you. Albert Einstein's mother was not wanted to marry her. What her son was married her because she was so much intelligent and book like her, like his. Correct. And also she was 3 years older than him, and that's why she did not want to marry her. Okay, दो reasons थे. एक तो वो बिल्कुल उसकी जैसे intelligent bookworm थी, और also that she was 3 years older than her son. Okay, so that's why she did not want to marry. Okay, good, Anushka. Others also, children, you have not turned on your cameras. I'm not able to see you, Ayan, Sameer, Shaurya, Ujjwal, Anjali, Rakshit. You're in the class, so you have to turn on your cameras compulsorily. That's all. It is a rule. आपको ऐसा नहीं आप earphones लगा के और गाना सुन रहे हैं, गाना नहीं सुन रहे हैं. This is in the, you're in a class, okay? And you have to turn on your cameras. Okay, next one. A letter that launched the arms race. ये letter कौन सा वाला है जिसके बारे में बात करें? A letter that launched the arms race. It is the 15th one. जिस letter की वजह से वो बॉम्ब बना,
American scientist ने bomb बनाया. It is the 15th. This is this one. This is this paragraph. Okay. So it is the 15th paragraph. A desk drawer full of ideas. अल्बर्ट आइंस्टाइन किसको बोलते थे? A desk drawer full of ideas, जहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ पे it is in paragraph number 8, जहाँ पे वो काम करते थे. He used to call that place कि यहाँ पे मैं लोगों की डिस्कवरीज तो देखता हूँ, पर साथ साथ मेरा मेरा काम भी हो रहा है, मैं अपनी डिस्कवरीज भी कर रहा हूँ. So that's why he used to call that place, used to call that thing, right? Okay, next one, marriage and divorce. So in which paragraph are we talking about Albert Einstein's marriage and divorce? It is in paragraph number 11. Okay. This. Okay. Just quickly answer me these questions. Who had these opinions about Einstein, that he was boring? Quickly answer these questions. I want the answer from you people. Do you know how to raise hand in Zoom? Do you know? There's an option to raise your hand in Zoom, or you can simply raise your hand like that. Okay. Anjali Vaishnav. Anjali is raising her hand. Anjali, where are you? You're not raising your hand. Just answer me these very, very simple questions. Or otherwise, if you don't raise your hand, I will simply pick a person from you and you will answer me then. Okay. Who had these opinions about Einstein? Einstein को लेके ये opinion कौन-कौन दे रहा था कि वो बहुत boring है? First one is that he was very boring. Who had this opinion? Ashish Jatt, answer me this question. Ashish, I'm unmuting you. Yeah, Ashish. His playmates. His playmates. Playmates. आपको आंसर पता है तो आप हैंड भी तो रेज कर सकते हैं ना. आपको पता है ना आंसर, तो फिर आपको हैंड रेज करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा तो मैं किसी को भी सिंपली पिक कर लूंगी. ठीक है? आशीष, आंसर मी द क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन, दैट ही वाज स्टूपिड एंड he would never succeed in life. ये किसने ओपिनियन दिया था आइंस्टाइन के बारे में? His Yeah, headmaster. His yes, headmaster. good. That, yeah, the third one, that he was a freak. ये किसने ओपिनियन दिया था? No, ma'am, I don't Try. know. कि वो फ्रीक है, ये उसकी मदर ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने कहा था कि he was a freak. Okay, good Ashish, very good. Okay, so next one, third question. Explain what the reasons for the, इन सब के लिए आपको reasons बताने हैं. Albert Einstein leaving the school in Munich for good. Albert Einstein ने स्कूल क्यों छोड़ा? जो म्यूनिक वाला जो स्कूल था वो क्यों छोड़ा? Yes, children. Ashish is again raising his hand. किसी और को आंसर नहीं पता है क्या? किसी को आंसर नहीं पता है, सिर्फ आशीष knows the answer in the class? Okay, I'll pick any one of you. Rakshit Agrawal, just switch on your camera. Rakshit, Anushka, Aditi, Anjali, Shaurya. मैं आपको बार बार से नहीं बोलूंगी कि अपना कैमरा स्विच ऑन करिए. बार नहीं बोलूंगी मैं आपको. Okay? You are in the class and your cameras should be turned off during the whole class. Okay, so उन्होंने जो म्यूनिक वाला स्कूल छोड़ा, वो क्यों छोड़ा? उन्होंने छोड़ा ये स्कूल because he was, वहाँ का जो स्कूल रेजिमेंटेशन था, वहाँ का जो बहुत extreme discipline था, that's why he left the school. Albert Einstein wanting to study in Switzerland rather than Munich. वो स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे म्यूनिक के बजाय? So he wanted to study in Switzerland because this country, Switzerland, was more liberal than Munich. वहाँ पे इतने strong rules and regulations नहीं थे जितने कि म्यूनिक के अंदर थे. It was a more liberal country, बहुत ज्यादा free country थी. That's why वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे. Third one, Einstein seeing in Mileva and Ali. Mileva उनको उनकी Ali जैसे क्यों लगी? Ali मतलब साथी जैसे क्यों लगने लगी? Because एक तो वो दोनों बहुत intelligent थे, and another one is because they were against the Philistines. Philistines, who are Philistines? Anyone knows? Philistines are people who don't like art and culture, जिनको ये सब नहीं पसंद होता. Okay, so we will continue with the questions, children, in the next class. In the next class, we will continue with the other questions. Okay, then, see you all. Thank you so much for today's lecture, and we will meet in the next class. Thank you so much.